Hello and welcome to my academy. Students, I hope you are doing fine. And जैसे कि आपको पता है आज हम जो 11th क्लास एनसीईआरटी दैट्स बायोलॉजी का पहला यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट्स द लिविंग वर्ल्ड. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. आइए हम स्टार्ट करेंगे. पहले हम देखेंगे व्हाट्स लिविंग. लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, okay, and are capable of carrying out various cellular activities. So living things are made up of cells. That means every living creature on this planet, they are made up of cells and are capable of carrying out various cellular activities. Obviously जब cell है cell में cellular activities भी होती हैं. So what are these cellular activities? So these cellular activities include, like we have cell division, cell proliferation, cell differentiation, propagation of or the transmission of nerve impulse, cell adhesion, and even the respiration takes place in the cell. So these are various types of cellular activities that are very much essential for the survival of an organism. So got it, my students? I hope you are getting it. What are the cellular activities? So मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखूंगा. What are these cellular activities? Like we have cell division, cell proliferation, even cell adhesion. So these are some examples. So you can take the many more examples. So these are some examples. Now these are some cellular activities. Now the main characteristics of living organisms are. So can you tell me what are the main characteristics of living organism? जैसे हम पहले बोलते हैं कि what are the characteristics of an organism, हमारे माइंड में क्या क्या आता है? ग्रोथ. फाइन, हम ग्रोथ की बात करते हैं. रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस. Fine, these are some characteristics of living organism. Okay, let's talk about the growth. Growth can be defined as an overall increase in mass. अगर mass में increase हो जाए, और size of tissues और cells में increase हो जाए, और organism में itself increase हो जाए, organism ही increase हो जाए, और उसका कोई part increase हो जाए, so we call it as a growth. इसमें कोई rocket science है ही नहीं. So you all know what is the growth. So let us talk about the growth and its types. So there are two types of growth. One is the extrinsic growth and second is the intrinsic growth. So intrinsic growth, जब हम intrinsic growth की बात कर सकते हैं, so we can say the growth from the inside of the body. Can you tell me what is the growth from the inside of the body? Yeah, exactly. So we have the cells can grow from the inside, the tissues can grow from the inside, even organism can grow from the inside. So we call it as a intrinsic growth, and this is a characteristic property of living organism. And second thing, we have extrinsic growth, growth from the outside. जो आउटसाइड बाहरी दुनिया से जो ग्रोथ होती है बाहर की साइड से, सो वी कॉल इट एज एन एक्सट्रिंसिक ग्रोथ. सो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कैन टेक प्लेस इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो फॉर एग्जांपल, अगर हम देखेंगे माउंटेन की यहाँ पे बात करेंगे, सो माउंटेन में जो ग्रोथ होती है वो होती है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ. दैट मीन्स ग्रोथ बोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. सो वी कैन नॉट से द ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होती है. फाइन. सो हियर इज द एग्जांपल ऑफ डिवाइडिंग सेल्स यू सी. सो दिस इज द intrinsic growth. In case of mountain, the extrinsic growth occurs. Fine. So this is the growth. So यहाँ पे जो second characteristic of living वो हमारा reproduction है. Fine. So what is reproduction? So reproduction is nothing but the production of new individuals. New individuals का बनना, new organisms का बनना is called a reproduction. Okay. So second definition is making copies of themselves. So living organisms, what they can do, they copy themselves by the process of reproduction. So we call it as a reproduction. And so best example, in case of the human is reproduced, new individuals are formed. Fine. So reproduction is of two types. One is the asexual reproduction and second is the sexual reproduction. So यहाँ पे हम बात करेंगे पहले asexual reproduction. So what is this asexual reproduction? Asexual reproduction is a type of reproduction in which
a single parent is involved. That means only one parent is involved. That means either mother or father. So not both. Fine. So reproduction in which the fertilization of the gametes, gametic fusion and the meiosis is not involved. That means अगर हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वहाँ पे क्या होता है, both the sperm that's from the male side and the ova that's from the female side, they unite to form a zygote, and this zygote eventually it develops into an fetus एंड फाइनली इनटू द इंडिविजुअल. सो यहाँ पे वो नहीं होता है, यहाँ पे एक ही जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली सिंगल पेरेंट होता है. सो उसी सिंगल पेरेंट से क्या होता है, प्रोजेनी बनती है, उसी सिंगल जो पेरेंट से जो है पॉपुलेशन बनती है. एंड दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वी कॉल इट एज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जैसे कि बाई एसेक्सुअल स्पोर्स, स्पोर फॉर्मेशन किन में होता है, एल्गे एंड फंजे में. सो ये जो इनका रिप्रोडक्शन होता है ये स्पोर फॉर्मेशन से होता है. एंड सेकेंड थिंग इज द बडिंग, एंड बडिंग टेक्स प्लेस इन द ईस्ट एंड हाइड्रा. हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग एंड बडिंग होता है हाइड्रा और ईस्ट में. एंड फ्रेगमेंटेशन इन केस ऑफ स्पायरोगायरा एंड रिजेनरेशन इन केस ऑफ प्लेनेरिया. So I'll show you here. Yes. So in case of the bacteria, what we have binary fission. So that means the bacteria can reproduce through this binary fission. This is the parent bacteria. So cell divides, a cell division takes place, and this cell divides into the two daughter cells. That means from a single parent, two new daughter cells are formed. And this process is called a binary fission and takes place in the bacteria. Got it? I hope you are getting it. So this is the asexual reproduction. And second thing, in case of the hydra, हाइड्रा में क्या होता है कि एक सिंगल हाइड्रा होता है, उस पर एक टाइनी जो है यहाँ पे बड फॉर्मेशन होता है. और ये जो बड फॉर्मेशन जो है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता जाता है. एंड जो लास्ट स्टेज आता है इस बड फॉर्मेशन का, ये जो बड है ये डिटैच होता है फ्रॉम द पेरेंट बड, पेरेंट हाइड्रा, एंड डेवलप्स इनटू अ कंप्लीट हाइड्रा. And when it gets detached and develops into the complete hydra, and this process is called the budding, the bud formation. Fine. So it takes place in the hydra. This is another type of asexual reproduction. And third, we have this fragmentation of planaria. So इस प्लेनेरिया में क्या होता है, इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है. ये जो है पेरेंट प्लेनेरिया होता है, इसमें फ्रेगमेंट होता है. ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू ए डॉटर प्लेनेरिया. एट कंप्लीट इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल में जो ये फ्रेगमेंट्स हैं ये कंप्लीट और इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल में डेवलप हो जाते हैं. एंड दिस टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड द फ्रेगमेंटेशन. फाइन. सो दिस इज द these are some types of asexual reproduction. Got it? Yes. The number third characteristic of living organism is metabolism. So what is this metabolism? The sum total of all the chemical reactions occurring in the body is called a metabolism. That means सारी जो chemical processes, chemical reactions that are taking place in the body, उनको हम metabolism कहते हैं. For example, so we human beings are the living organisms obtain the food. This food is then utilized. When we utilize food and is broken down into the simpler ones, and after getting oxidized, the food is converted into energy. So this energy is utilized to carry out the different life processes, different activities, like for the formation of proteins, RNA, DNA. So this we call it as a metabolism. So metabolism are the series of events or the series of chemical reactions that are taking place in the body. So to convert these complex materials into the simpler ones. All organisms, both unicellular as well as multicellular, obviously either unicellular or multicellular, ये तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है. तो ये जो आपका मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मेटाबॉलिज्म के बिना जिंदा नहीं रह सकते लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म. सो नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शोज मेटाबॉलिज्म. दैट मीन्स कि नॉन लिविंग थिंग्स में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है. सो दिस मेटाबॉलिज्म इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ living organisms, or we can say the defining property of
living organism. Got it? So yes, number fourth characteristic feature of living organism is cellular organization. So what is the cellular organization? So each and every living organism is made up of cells. Fine. So we can define the cell, the fundamental, structural, and functional unit of all the living organisms. That means living organisms are composed of cells. Just like the houses are made up of bricks, in the similar fashion, living creatures are made up of cells. And this is the defining property of life. So without these cells, there would be no life. That is the reason why this is a defining property of life. Fine. Yes, number fifth characteristic of a living organism is consciousness. चलिए हम देखेंगे ये कॉन्शियसनेस होता क्या है. इट इज़ अ प्रॉपर्टी बाय विच एन ऑर्गेनिज्म रिएक्ट्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस. Obviously, an organism, a living organism, it responds to a particular stimulus. For an example, when we touch a hot plate, उस टाइम पे क्या करते हैं हम फौरन से हाथ को हटा देते हैं. So that means we are giving response to a particular stimulus. Okay, so or we can say with the changing environment, या change बाहर environment हो रहा है, and the living organisms they adopt themselves with the changing environment. Fine. So this uh, we can say we are giving the a response to a particular stimulus. So this is a characteristic feature of living organisms. So can non-living organism perform this? No. So is there any kind of consciousness? Can we say there is a consciousness in non-living organisms? No, absolutely not. So this is the defining property of living organisms. Fine. Consciousness is a defining property of living organisms.